आर.के. सिंह साहब, डीन कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, डॉक्टर मनीष श्रीवास्तव, डीन कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री, डॉक्टर बीपी भट्ट साहब, एनडीडीबी से पधारे हमारे विशिष्ट अधिकारीगण, विशेष रूप से डॉक्टर सीपी देवानंद साहब, एमडी एनडीडीबी डेयरी सर्विसेज, डॉक्टर रघु मल्लेगौड़ा, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एनडीडीबी डेयरी सर्विसेज, श्री राजेश गुप्ता जी, रीजनल हेड नॉर्थ रीजन एनडीडीबी डेयरी सर्विसेज, श्री मोहम्मद राशिद जी, सीनियर मैनेजर एनडीडीबी, आज हम सबके बीच में यहाँ पर इस सभा कक्ष में उपस्थित हैं। आप सबका हृदय से स्वागत और अभिनंदन। हम सबके बीच में उड़ीसा एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट से आए हुए हमारे अतिथिगण हैं, जो यहाँ पर एक विशेष प्रशिक्षण के लिए यहाँ पर उपस्थित है। आप सभी अधिकारीगण का विशेष रूप से स्वागत और अभिनंदन है। महोदय, इस समय सभा कक्ष में हमारे 3 संस्थानों के, हमारे IGFRI परिवार से, RLB परिवार, RLB सेऊ परिवार से और काफरी झांसी से हमारे साइंटिस्ट, टेक्निकल ऑफिसर और अधिकारीगण यहाँ इस सभा कक्ष में उपस्थित हैं। उनका सबका हार्दिक स्वागत है। साथ ही साथ इस समय ये पूरा प्रोग्राम जूम पर और यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है। उन सभी जनों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है जो ऑनलाइन हमसे जुड़े हुए हैं। धन्यवाद। और इस कड़ी में अब मैं अपने निदेशक महोदय का अनुरोध करूंगा कि वे हमारे आज के मुख्य अतिथि महोदय डॉक्टर विनीत शाह साहब का पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। मैं आई रिक्वेस्ट टू आवर डायरेक्टर डॉक्टर पंकज कौशल टू वेलकम और चीफ गेस्ट डॉक्टर विनीत साहब। May I also request to director to welcome our honorable Vice Chancellor Dr. A.K. Singh Sahab to be introduced, and Dr. A.M. Vasalam Sahab, Director, Central Agroforestry Research Institute, Jhansi. I request Head of Division Dr. Purushottam Sharma to welcome our Director Dr. Pankaj Kaushal. This is the first Foundation Day we are celebrating under his guidance as a director. We have many distinguished guests here in this auditorium. I request to our managing secretary of this program, Dr. R.V. Kumar Sahab, to welcome our guest, Dr. C.P. Devanand Sahab, Managing Director, NBDB Dairy Services, with a bouquet. I request to welcome Dr. Raghu Mallegowda Sahab, Executive Director, NBDB Dairy Services. I also request to present a bouquet and welcome Sri Rajesh Gupta ji, Regional Head, NBDB Dairy Services. I request to welcome Sri Mohammed Rasid Sahab, Senior Manager, NBDB. I request to Dr. R.V. Kumar to welcome Dr. R.K. Singh, Dean College of Agriculture, RLB CAU Jhansi. We are highly pleased and I request to welcome Dr. S.K. Sharma sir, ex-Vice Chancellor, CST HPKB Palanpur and Director NBDB. I request to welcome Dr. B.P. Bhatt sir, our ex-director from the ICR Legal Research Complex, Patna. I also request to welcome Dr. O.P. Singh, CEO Balni, one of the success stories has been created in Jhansi under his guidance. I request to Dr. R.V. Kumar to welcome our ex-colleague, ex-project coordinator, and Dr. A.K. Sahab with a bouquet. I request to welcome Dr. Manish Srivastava, Dean, College of Horticulture and Forestry, RLB CAU Jhansi. And I also request to welcome Dr. Thank you. And with this, may I request to distinguished guest on the dais for the lightning of the land to start this program.
May I request to Mr. P.K. Karpe to assist in the lighting up line. May I request to Mr. Ajit to play ICR theme song, please. ऋषि परिषद भारत की सुखद प्रतीक हरित भारत की ऋषि धन शुभ संरक्षण शस्य श्यामला छवि भारत की जय जय कृषि परिषद भारत की हिम प्रदेश से हर पथ पर है शक्ति शिक्षा शोध प्रसार सकल तक आशा स्वावलंबित भारत की जय जय कृषि परिषद भारत की जय जय कृषि परिषद भारत की। Thank you. So before I request to our director for his formal welcome address, just in brief about this Foundation Day lecture. We have now we have been inviting our respected learned speaker on this occasion of the Foundation Day in past, and those lectures have given the directions for the research and new ideas to the scientists of this institute and the grassroots researchers and the further researchers of the country. But now onwards, we have started a new lecture series, and we are fortunate that we have got the most experienced person and learned person in the dairy sector with us, Dr. Minesh Sahab. Because the topic we have now this foundation lecture is towards quarter plus India. That is our ultimate goal and vision of this institute. So we are starting this lecture series. This is the first lecture towards quarter plus India, चारा आत्मनिर्भरता की ओर। तो ये हम लोगों का पहला लेक्चर है और इस स्थापना दिवस पे हम सब गर्वित महसूस करते हैं कि देश में सबसे एक्सपीरियंस आदमी जिन्होंने डेयरी सेक्टर में काम किया है आज हमारे बीच में मुख्य वक्ता के रूप में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित है डॉक्टर मिनेश साहब। नाउ मे आई रिक्वेस्ट टू अवर डायरेक्टर डॉक्टर पंकज कौशल for his formal address, welcome address and a brief about the program and institute. Thank you, Dr. Kosal. आप सबको मेरा नमस्कार और नमस्कार के साथ 66वें फाउंडेशन डे की आप सबको बहुत बहुत बधाई। ये दिन और भी गरिमामय हो जाता है जब हमारे साथ हमारे वक्तागण जो अब सजा हुआ डायस है और जो सजे हुए डायस पे हमारे हिंदुस्तान के महानुभाव में बैठे हैं, ये इनकी उपस्थिति आज के दिन को और भी गरिमामय बनाती है। आप सबसे अनुरोध है कि हमारे गेस्ट का जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। माननीय मनीष शाह जी, ऑनरेबल वाइस चांसलर साहब AK सिंह साहब, डायरेक्टर काफरी अरुणाचलम साहब,
हमारे सीनियर्स एंड मेंटर्स डॉक्टर एस.के. शर्मा, डॉक्टर ए.के. रॉय, डॉक्टर आर.के. सिंह, डॉक्टर मनोज, एनडीडीबी के ऑफिसर्स, आरएलबी सीएयू से और काफी से आए हुए हमारे कलीग्स, हमारे साइंटिस्ट, वोलिनी के सीईओ साहब और आईजीएफआरआई संस्थान के परिवारजन। 1962 में जन्मा हुआ ये संस्थान आज अपनी 63वीं स्थापना दिवस मना रहा है। सर, स्थापना दिवस हमारा 1 नवंबर को मनाया जाता था, लेकिन चूंकि 1 नवंबर को एक बेहतरीन दिन दिवाली का था और उस उपलक्ष्य में हमने सोचा कि इस बार हम स्थापना दिवस की जगह स्थापना सप्ताह मनाएंगे। इस स्थापना सप्ताह में हमने डाइवर्स एक्टिविटीज प्लान करी। सबसे बड़ी प्लानिंग जो हमारी थी कि हम एक लेक्चर सीरीज हमारे स्लोगन के साथ शुरू करें, जिसमें हम आगे आने वाले कई सालों तक काम करेंगे। और एक ये चैलेंज लिया गया कि भारत को चारे के लिए आत्मनिर्भर कैसे बनाएं। ये हमारा स्लोगन है, हमारी थीम है, हमारा थ्रस्ट है और आगे आने वाले दिनों के लिए हमारा विजन है, टुवर्ड्स ऑर्डर प्लस इंडिया। और जब हम इसके लिए बातें कर रहे थे, प्लान कर रहे थे, तो सबसे विद्वान, सबसे इन्वॉल्व डेयरी सेक्टर में जो संस्था है और सबसे एक्सपीरियंस जो हमारे पास शख्सियत थी, हमने उनको अप्रोच किया। हमें बहुत आभार है सर आपका कि आपने हमारे लेक्चर सीरीज को एक्सेप्ट किया, पहले लेक्चर को, और यहाँ पर पधारने का कष्ट किया। ये हमारे लिए अत्यंत गर्व का विषय है सर कि आप फिजिकली यहाँ पर आए, वरना ट्रेवल और बिजी होने के बाद आदमी जनरली ऑनलाइन प्रेफर करता है टॉक देना, बट वी आर वेरी थैंकफुल टू यू सर दैट यू मेड इट पॉसिबल टू बी हियर in your physical presence. We are also very thankful, and also I join hands with the organizing committee to welcome our worthy Vice Chancellor Sahab, Dr. A.K. Singh Sahab, who has been here for all our functions to bestow his blessings to us. He has been our senior since long, और हम में से कुछ आपके द्वारा पढ़ाए भी गए हैं सर। So he is a mentor for us, he is a teacher for us, and definitely a guiding force for us. We are very happy to have you here, sir. बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। काफरी के डायरेक्टर साहब भी आज हमारे बीच मौजूद हैं। अरुणाचलम साहब आईसीआर से लेकर आईजीएफआरआई तक और आईजीएफआरआई से लेकर काफरी तक और काफरी से लेकर कासोगोड तक बड़े प्रसिद्ध रहे हैं। आपके अनुभव की हर जगह तारीफ होती है और ये हमारे लिए भी हर्ष का विषय है कि आप हमारे साथ के इंस्टीट्यूट को गाइड कर रहे हैं आज की तारीख में, एंड वी आर हैविंग अ फ्रूटफुल कोलैबोरेशन, कॉम्प्लीमेंटेशन एंड सप्लीमेंटेशन बिटवीन दीज 3 इंस्टीट्यूट्स। On behalf of organizing committee, I extend my heartfelt thanks to you, sir, for coming up here and grace the occasion. आज का दिन हमारे लिए, सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक छोटे से कमरे में जो शायद सीपरी में हुआ करता था, वहां से ये जर्नी स्टार्ट हुई थी सर 1962 में, और आज ये वन ऑफ दी वर्ल्ड्स मोस्ट इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन ऑन ग्रासलैंड रिसर्च, जिसमें कि आज हमको सौभाग्य है कि हम यहाँ पे काम कर रहे हैं और चारा उन्नति की ओर योगदान करने में हम आगे बढ़ रहे हैं। सर, लेट मी मेक दिस वेरी ऑब्वियस कि आज का दिन एक अच्छे पर्व की शुरुआत का दिन भी है। आज से छठ पूजा शुरू हो रही है और आज से ही हमारे मेन फंक्शंस जो हैं आईजीएफआरआई फाउंडेशन डे के शुरू हो रहे हैं। 1 तारीख को सर हमने अपने 63वें जन्मदिन पर 6300 दीपों की माला जलाई थी संस्थान में, और इस उम्मीद के साथ कि ये रोशनी आगे बढ़ती जाएगी। वो हमारे फाउंडेशन डे प्रोग्राम का पहला फंक्शन था।
दूसरा बड़ा फंक्शन सर आज है, जब सारा देश मिनिस्टर साहब को सुनेगा, उनके एक्सपीरियंस को शेयर करेगा, और एक डेयरी सेक्टर की क्या उम्मीद है फॉर्दर रिसर्च से, उस बारे में हमें गाइडलाइंस और एडवाइस मिलेगी। कल 6 तारीख को हमारा स्पोर्ट्स फंक्शन है सर। 7 तारीख को हमारे जो 4 सब सेंटर्स हैं, आईजीएफआई के 4 सब सेंटर्स हैं सर, पालमपुर, श्रीनगर, अविका नगर और धारवाड़ में। हमारे सारे सब सेंटर्स 7 तारीख को आईजीएफआई फाउंडेशन डे मनाएंगे, जिसमें कि लर्नर साइंटिस्ट को इनवाइट किया गया है ऑनलाइन लेक्चर्स के लिए। वो ऑनलाइन लेक्चर्स भी आज की तरह जूम पे और यूट्यूब पे प्रसारित होंगे। और एक खास प्रोग्राम 7 तारीख को रखा गया है हमारे पालमपुर सेंटर में, जहां माननीय डीडीजी साहब उस फंक्शन का इनॉग्रेशन करेंगे, और वहां पर जो पालमपुर यूनिवर्सिटी और स्टेट गवर्नमेंट्स के जो ऑफिशियल्स हैं, उनकी प्रेजेंस में वो किसानों को और लाभार्थियों को संबोधित करेंगे। उसका भी लाइव प्रसारण होगा सर। 8 तारीख को हमारा मेन फंक्शन है, जिसमें कि सीडी माई साहब को हमने रिक्वेस्ट किया था, एंड ही एक्सेप्टेड अवर रिक्वेस्ट टू बी द चीफ गेस्ट ऑफ दैट ओकेशन। वी विल हैव दिस प्रिविलेज टू लिसन टू हिम ऑन दैट डे, एंड ऑन द सेकंड हाफ वी हैव अ ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन ऑन द सेम टॉपिक टुवर्ड्स फॉर्डर प्लस इंडिया, जिसमें कि पैनलिस्ट जो होंगे सर हमारे, दे आर फ्रॉम डाइवर्स क्लाइंटेल बैकग्राउंड फॉर अस, इंक्लूडिंग पॉलिसी मेकर्स। तो ये हमारे पूरे एक जो उत्साह है हमारे साल भर का फाउंडेशन डे का, उसको हमने एक हफ्ते में तब्दील किया है। और बहुत शुक्रगुजार हैं हम कि इस फाउंडेशन डे पे हमारे माननीय अतिथियों ने हमारा अभिवादन और आमंत्रण स्वीकार किया, और हमारे संस्थान के हर बशिंदे को यहाँ आने का सौभाग्य मिला। सर, ये मैं बता चुका कि हमारे 4 सेंटर्स हैं। हमारा जो एआईसीआरपी का प्रोग्राम है, वो भी सर आईजीएफआरआई से ही कंट्रोल होता है, आईजीएफआरआई का ही पार्ट है। डॉक्टर विजय यादव हमारे प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर हैं। डॉक्टर ए रॉय इनसे पहले प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर थे, जो कि आज की तारीख में वॉलंटरी और बाकी सेंटर्स मिलाएं तो दैट एड्स टू 50 सेंटर्स। इट मीन्स कि 50 सेंटर में ऑल ओवर इंडिया हम चारे की के बारे में खोज कर रहे हैं, चारे की टेक्नोलॉजी हम उस पर डेवलप कर रहे हैं, उसको प्रसारित कर रहे हैं। चारे की महत्ता सर पिछले कुछ सालों में बढ़ी है, और इस महत्ता को बताने के लिए कुछ आउट ऑफ द बॉक्स रिसर्च भी हम लोगों ने करी है। हमारे संस्थान का पहला जो नाम है वो ग्रासलैंड है, इंडियन ग्रासलैंड एंड फॉर्डर रिसर्च इंस्टीट्यूट। ग्रासलैंड हमारी प्रायोरिटी में है सर। एक छोटा सा फैक्ट मैं बताऊं, एक छोटा सा फिगर मैं बताऊं। वी हैव कल्टिवेटेड फॉर्डर्स in about 8.5 million hectares in India, but we have grasslands in 11 million hectares in India, and we are ignoring that. वो जो एक पर्टिकुलर इफेक्ट और कंसर्न मिलना चाहिए ग्रासलैंड को, वो नहीं मिल रहा। एंड ओवर टू दैट we have more than 90 million hectares which are degraded land, and we always admire the beauty and the adaptability of grasses, that they can grow in those places where other crops refuse to grow. Our research has clearly shown that growing perennial grasses adds to the ecosystem services of not only the area concerned but the nearby area. It reduces methane, it enhances biodiversity, it enhances methanotrophs, it enhances good bacteria, it enhances good arthropods. इस इकोसिस्टम सर्विसेज जो ग्रासलैंड को दी जाती है, ये अब हम हर फोरम पे बोल रहे हैं, और शायद यही कारण है कि इन एडिशन टू इकोसिस्टम सर्विसेज दैट आवर ग्रासेस डू ऑफर अस, they are also being now identified as plant factories for secondary metabolites. They have also been identified as feedstock for biofuel, और इसलिए जो पेनियल ग्रासेस है ये अचानक लाइमलाइट में आ गई है। आज की तारीख में सर एक ये फिगर जो हम लोगों ने एम्पिरिकली प्रूव किया है, we have a deficit of 11% of green fodder, and we have a deficit of about 23% of dry fodder in India. This deficit has to be completed.
and we need to, that's why we need to go for quarter plus. Quarter plus तभी होगा जब इस deficit को, this is pan India average. We have deficit up to the range of 95% at many years. तो ये deficit पूरा करने के लिए it's not only improvement that will do, it's not only production that will do, but all these 7 disciplines that we are divided into at this place, they have to work. Sir, हमारे बड़े wisely divided 7 departments हैं: crop improvement, crop production, seed technology, farm machinery and post-harvest value addition, social sciences, and those 2 important departments that we already discussed in the morning: grassland and silviculture management and plant animal relationship. तो ये जो पूरा एक network है, this must be taken as a whole to address the fodder issues at any stage, be it research, be it education, be it extension, be it development of the country. और इसीलिए ये जो हमारे सारे जो डिविजन्स हैं, ये मिलकर काम कर रहे हैं. इस काम का ही फल है कि पिछले करीब 30-40 सालों में जो डेफिसिट कभी 55% होता था ग्रीन फॉडर का, वो हम 11% में लेके आए. एंड वी हैव मेड दिस अ पॉइंट कि आगे आने वाले 5 से 8 सालों के बीच में इस 11% डेफिसिट को we will get it to less than 5%, sir. And we have a roadmap for that. We have made Pan India program, and also we have made state specific fodder development, resource development plan for each state. और उस फॉडर डेवलपमेंट प्लान में ये साफ साफ और बहुत क्लियर बताया गया है कि ये आपका डेफिसिट है, ये आपकी टेक्नोलॉजी जो आपको लगानी है, और ये आपका रोड मैप है, और इसमें कितने पैसे खर्च होंगे, राइट फ्रॉम R&D टू एक्सटेंशन एंड HRD component. So that all, and I'm very happy to share कि out of these 30 state specific fodder resource development plans, 5 states have adopted the plan as such. That includes Rajasthan, MP, UP, Tripura, and Goa. And soon we are going to have some good news from Arunachal Pradesh as well, and Assam as well, right? इसी के साथ साथ over the years we have developed more than 350 high-yielding varieties. Happy to share, we work on 34 crops. Working on fodder crops is little challenging. We have perennial versus annual. We have legume versus grasses. We have single cut versus multi cut. We have rangeland versus cultivated. So a lot of options are there, a lot of opportunities are there. And for each opportunity, we have developed a specific plan for fodder security for that region. And those plans are now available, and we are also providing consultancy to the respective stakeholders to those plans. In last year, we got consultancy projects to develop about 1,000 hectares ravine lands in MP, about 1,000 hectares in Rajasthan. We are negotiating for about 7,500 square kilometers in West Bengal, in addition to other states that we are working in. So we also offer consultancy services. We develop more than 200 technologies suitable in various areas, whereas in all areas, in fact, of fodder development and fodder production. During the years, last year, we also have started licensing our technologies. 6 varieties have already been licensed, 8 are in pipeline. We got 2 patents, and also we have a couple of breakthrough technologies when we talk about breeding of perennial grasses. Polyploidy and apomixis, these 2 points we have already addressed, and we are the only institute in the world who can generate variability even though the plants breed through apomixis or polyploidy. We are the only institute. And that is the point that we are trying to sell our products, because we can generate variability in grasses which are otherwise not at all possible to generate. We have technologies for that. So these are a couple of breakthrough technologies that we are working in, and of course these are proven and successful technologies that we have generated. We also have
In addition to varieties, we also have about 30 germplasm registrations, specific trade-specific germplasm registrations, registered with Plant Germplasm Registration Committee. Over the years, we have been very happy to get acknowledged for our work and also bringing some laurels to the institute. We got Best Institute Award in 2015. 17 fellows of the academies, 31 overseas fellowships, and about 12 national awards during past 15 years or so. So our information, our research is being acknowledged at policy and at authority level and also at academic excellence for that. We have a plan for coming years for which we have identified recent thrust areas for research that includes mapping of the grasslands, enhancing the ecosystem services offered by the grasslands, their rejuvenation. We are also in the process to develop an app which can tell you the health index of a grassland. We are not going to ignore grassland. We are the only institute who has responsibility to work on that. There are many institutes working on maize, bajra, and sorghum, but we are the only institute who work on grassland. And that's why, looking into the importance of the grasslands, UNO has declared 2026 as International Year of Rangeland and Pasture. So that is an opportunity for us to come to a global platform. We are also into novel genes discovery, and latest what we have done is by utilizing many combinations of wild species, we have generated seed producing Napier bajra hybrid, and that is a breakthrough. Government has just announced White Revolution 2.0 couple of weeks back, and White Revolution 2.0 cannot come without Fodder Revolution 1.0. And for Fodder Revolution, definitely, sir, the research, the extension, the education, and the development, dealing with fodder crops, dealing with forages, dealing with perennial legumes and grasses, and dealing with all sectors of fodder resource development and conservation has to come together, and to which we believe agencies like NDDB are going to be pivotal in role when we talk of dissemination of our technologies to the grassroots level and to generate information, the interest for fodder production and fodder seed production. These are our ideas, and with this idea we are trying to approach forward. And again, I would like to welcome all our guests for accepting the proposal, and especially to Minister Saab, that his words of wisdom are definitely going to be noted for, so that both the research and the dissemination of technology go hand in hand to improve the fodder scenario of India and definitely to fulfill our dream towards fodder plus India. Thank you very much. Thanks a lot. Thank you to our director, Dr. Pankaj Kaushal sir, for giving the brief about our recent achievements and our challenges and our plans for the future. Just to add to our director that now we are working with the more than 20 private companies as a partner. They are our partner in our research, technology assessment, and we have more plans to have more MOU and the agreement, I think within 2-3 months. So more going to be added in this batch. Moving ahead now, may I request to our director, Dr. Kaushal, to present a token of love and mementos to our guests. First, I request to present a memento to our chief guest, Dr. Minister Saab.
request to our director sir to present a memento to our special guest, guest of honor, Honorable Vice Chancellor of RLBCU, Dr. A.K. Singh sir. We are highly delighted and thankful to our guest, our chief guest, and guest of honor for being with us, for his benign presence here this occasion. May I request our director to present a memento and felicitate to our neighboring institute director and our partner in the all program, Dr. A. Arunachalam sir, director, of the party. So, please thank you. Thank you, sir. Now, we are entering into the next part of the program. We have our learned guests here. So this time to listen their ideas and views. First, I request to our Director Kakari, Center for Forestry Research Institute, Dr. A. Arunachalam, that to be to come here and present his ideas and views on this occasion. Dr. Arunachalam sir. आप सबको नमस्कार। अब 1 तारीख से तो हम सब उत्सुक है कि IGFRA का फाउंडेशन डे मनाया जाए, और काफी वर्चुअली मनाया गया, काफी सोशल मीडिया में फैलाया गया और काफी रिएक्शंस, खुशी सब बांटी गई। आज छठ पूजा की शुरुआत में फाउंडेशन लेक्चर सीरीज भी शुरू हो गया, बधाई सबको। तो इस अवसर पर हमें बुलाने के लिए धन्यवाद, और IGFRA परिवार सबको हैप्पी फाउंडेशन डे और हैप्पी फाउंडेशन सप्ताह, जैसे कि हमारे डायरेक्टर साहब ने बताया। अब किसी भी व्यक्ति के लिए बर्थडे बहुत महत्वपूर्ण दिन होता है, और किसी भी संस्था को भी वही। लेकिन जब आदमी जन्म लेता है, उसका श्रेय सिर्फ 2 लोगों को जाता है, हमारी माँ और पिता। लेकिन संस्था जब जन्म होता है, कई लोगों का सोच उसमें, और उसकी हमें कदर करना चाहिए। बड़ी महत्वपूर्ण संस्था है जो ICAR ने इस देश को दी, जो शुरू से ही पर्यावरण की प्रति भावना रखते हुए काम, और इस देश में रहने वाले आदमी के अलावा भी जो जीव प्राणी है, उनकी जरूरतों को मद्देनजर रखते हुए ये संस्था बनाई। जो आजकल के इस डेट में जो अग्रो इकोलॉजी की जो बात करते हैं, वो इस इंस्टीट्यूट के मैंडेट में शुरुआत से ही रही। तो काफी जब हम ICAR में थे भी नहीं, तब भी हम लोग IGFRA के नाम बहुत जगह पे सुनते हैं। और जैसे हमारे डायरेक्टर साहब ने गिनवाया इस संस्था की उपलब्धियों को हम सबके सामने, जो मंच में बैठे हैं विशेष अतिथिगण और सामने बैठे हुए विशेष अतिथिगण सब सुन रहे थे, तो ये इंस्टीट्यूट काफी क्षेत्र में काम करता है और इंटरडिसिप्लिनरी काम करता है। और ICAR में जितने SMTs हैं, सब विभाग की लिंकेज इस इंस्टीट्यूट में देखने को मिलेगा, जो IRA जैसे संस्थाओं को भी नहीं मिलता है, जो एनिमल के बारे में सोचता ही नहीं। तो आपके संस्था की जो स्वरूप है, वो पूरे ICAR के मैंडेट को लेके आगे चलता है। और पहली बार जब हम लोग काउंसिल में कंटिजेंसी प्लान फॉर क्लाइमेट रेजिलियंस की जब बात चल रही थी, तब से ही पैरेलली हमारे राय साहब भी जानते हैं, जो IGFRA फॉरेस्ट डेवलपमेंट प्लान्स फॉर एवरी डिस्ट्रिक्ट बनाना शुरू कर दिए।
तो इस तरह का जो पायनियरिंग काम इस संस्था ने इस देश को किया है। हाँ, ग्रासलैंड्स थोड़ा पीछे रह गई, फॉरेस्ट आगे था ही। तो आजकल के देश में ग्रासलैंड के ऊपर भी उतना ही ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि ऑलमोस्ट इक्वल एरिया, इक्वल से ज्यादा एरिया ग्रासलैंड की इस देश में उपलब्ध। और जो ग्रीन पाउडर डेफिसिट की बात कर रहे थे हमारे पंकज साहब, 11% है जो भी है ड्राई पाउडर की, 23 की जो ड्राई पाउडर डेफिसिट है, तो जितना भी पूरा कर सके वो ठीक है, लेकिन हमारा उद्देश्य ये रहना चाहिए, एक एनिमल न्यूट्रिशन के ऊपर ध्यान हमें देना चाहिए। ये महत्वपूर्ण चीज है। और ऐसा देश में तो बहुत ज्यादा ही आदमी को इस विशेष रूप से काम करना चाहिए, सोचना चाहिए, प्लान करना चाहिए, प्रोजेक्ट्स बनाना चाहिए। जो देश इस विश्व में लीड कर रहा हो मिल्क प्रोडक्शन, वी आर दी नंबर 1 कंट्री इन दी मिल्क प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड। तो ऐसा सिचुएशन में अगर कोई ऐसा संस्था फाउंडेशन डे लेक्चर सीरीज खोले और उसकी चेयरमैन ऑफ एनडीडीबी को बुलाया, ये तो बड़ी लाजमी बात है। तो वेलकम सर आपके। और जो थोड़ा डेफिसिट की हम जब बात कर रहे थे, तो हम भी अपना संस्था की थोड़ा प्रचार प्रचार कर दूं। ऐसा नहीं कि ये संस्था बड़ा अलग संस्था है, ये इसी संस्था से बढ़ के बना है, इसी संस्था से बढ़ के जमीन बढ़ के ही RBCI जो केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय वो भी बनी। तो हमारे लिए तो ये घर की बात, हम माँ के घर में आते हैं तो हमारे लिए एक अलग ही एक भाव होता है, तो उस हिसाब से हम लोग करते हैं। तो 11% पाउडर जो है एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम्स में भी आता है। फिर हमारा इंस्टीट्यूट केंद्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान है जो फ्री पाउडर के ऊपर भी काम करता है, अनेक प्लांटेशन क्रॉप्स हो या ट्रीज हो उसके बारे में भी काम करते हैं। तो इस तरह का जो एकजुट होने का स्थिति बहुत कम लोगों को मिल सकता है, और इंटरडिसिप्लिनरी काम करने का मौका बहुत कम संस्थाओं में देखने को मिलता है, जो ये दोनों संस्थान में देखने को आपको मिलेगा। और इसके भी अलावा बढ़ के हम लोग जब सोचते हैं, तो आज के डेट में केवल मिल्क एनिमल्स के प्रति भावना नहीं, उससे भी नीचे हम स्मॉल रूमिनेंट्स में भी ज़्यादा लोग आजकल फोकस करते हैं। और न्यूट्रिफाइड पाउडर की भी बात आता है, तो काफ़ी एरियाज में ये IGFR ऑलरेडी काम करना शुरू कर चुके हैं, काफ़ी टेक्नोलॉजी इनकी कमर्शलाइज हो चुका है। और हमारे लिए भी गर्व है कि हमारे जो मदर इंस्टीट्यूट है जो बहुत आगे बढ़ रहा है, जिसकी बात हम लोग भी है और भागीदारी भी हम लोग देने चाहते हैं। और इस अवसर पर आप सब पेशेंट डे बधाई, और हमें बुलाने के लिए खास करके इस कार्यक्रम में बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। आपको इस जो मुख्य मुख्य बिंदु थे उनको रेखांकित करने के लिए, जो चैलेंजेस हैं उनको हाईलाइट करने के लिए, और इस अवसर पर अपने विचार रखने के लिए मैं अब अपने विशिष्ट अतिथि के रूप में यहाँ पर उपस्थित प्रोफेसर AK सिंह साहब, वाइस चांसलर RLBCU से अनुरोध करूंगा उनके विचारों के लिए। डॉक्टर AK सिंह साहब, ऑनरेबल वाइस चांसलर RLBCU। सबसे पहले फाउंडेशन डे की बहुत बहुत बधाई आप सबको, पूरे IGFRI परिवार को। हमारे बीच में आज NDDB के चेयरमैन आरडी विनीत शाह जी और IGFRI संस्थान के निदेशक डॉक्टर पंकज कौशल जी, डॉक्टर गुलाम जी डायरेक्टर कॉर्पोरेट, डॉक्टर पुरुषोत्तम शर्मा जी, डॉक्टर विजय यादव जी, NDDB के सभी अधिकारी जो यहाँ पे आए हैं, डॉक्टर SK शर्मा जी, डॉक्टर भट्ट, IGFRI के और जितने भी हेड्स ऑफ द डिपार्टमेंट्स हैं, साइंटिस्ट हैं, कर्मचारी हैं, और RLBCAU और काफी से पधारे जो
डीन्स, डायरेक्टर्स, वैज्ञानिक, उन सबका भी मैं इस अवसर पे हृदय से स्वागत करता हूँ। 1962 में IFRI का जन्म हुआ और मेरा भी जन्म 1962 का ही है। मुझे बड़ा कोई इंसिडेंट है और IFRI में मेरा आना लगभग 1987 से किसी न किसी कारण से मैं यहाँ पर आता हूँ। गेस्ट हाउस में रुका भी हूँ कई बार, पहले भी DD के बनने के पहले ही मैं कई बार यहाँ पर आया और बाद में भी बार बार मुझे यहाँ पर आने का अवसर मिला। और निरंतर हमने देखा कि जब जब आने को मिला तो कुछ न कुछ नया देखने को मिलता है कि संस्थान ने इतनी तरक्की की है। और अब चूंकि डॉक्टर कौशल साहब आए हैं और एक नई सोच के साथ इन्होंने शुरुआत की है और इसमें एक लेक्चर सीरीज की शुरुआत इन्होंने पहली बार की है। पूरे सप्ताह भर सेलिब्रेशन होगा, ये भी एक नई सोच है जो इन्होंने दी है। तो मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ इस तरह के नए कार्यक्रम शुरू कराने के लिए। और ऐसे संस्थान जो अपने में अद्वितीय हैं, एक तरह का अपना संस्थान है, देश में कोई है नहीं जो ग्रासलैंड और बॉर्डर पे एक्सक्लूसिवली काम करता हो। तो ऐसे संस्थान को आप पूरे देश के स्तर पर जीवंत रखें और उपयोगिता हमेशा साबित बना करके रखें, ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है जो कि ये संस्थान बराबर करता रहता है। इस संस्थान पर निर्भरता सभी प्रदेशों की है। जब भी बॉर्डर की बात आती है तो IFRI की तरफ लोग देखते हैं और उन राज्यों का जो प्लान डेवलपमेंट है वो भी इस इंस्टीट्यूट ने किया है, जो कि मेरे दृष्टि से बहुत बड़ा काम है जो कि संस्थान ने करके दिया है। नई नई वैरायटी का विकास हो या जो पोस्ट हार्वेस्ट या प्रोसेसिंग वैल्यू एडिशन की बात है जो ये संस्थान लगातार कर रहा है, वो भी बड़ा महत्वपूर्ण काम है जिसको आगे करने की जरूरत है। एक आंकड़ा अभी डायरेक्टर साहब ने प्रस्तुत किया कि ग्रीन फॉडर की अवेलेबिलिटी अब केवल 10% ही कम रह गई है। इसके मतलब 90% कंट्रीब्यूशन जो मतलब जो चाहिए जानवरों के लिए वो उपलब्ध कराने में हम सक्षम हैं। और ये बड़ी खुशी की बात है मेरे दृष्टि से कि 90% जो उपलब्धता है, जितनी होनी चाहिए उतना करने में हम सफल हैं। और जो आवश्यकताएं और भी हैं दूसरे न्यूट्रिशन की, एनिमल न्यूट्रिशन की, उसके ऊपर भी ये संस्थान काम करता है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आगे आने वाले समय में आपके नेतृत्व में ये संस्थान और कार्य कर पाएगा। हमारा विश्वविद्यालय भी इस संस्थान के साथ मिलकर के काम करता है और एक जो सी टेक्नोलॉजी का डिपार्टमेंट है उसका पूरा टीचिंग और एजुकेशन का प्रोग्राम आपके जिम्मे है जो कि आप संचालित करते हैं और उसके लिए भी आपको बहुत सारी कृतज्ञता मेरे तरफ से और मेरे संस्थान की तरफ से आपको है। IGFRI आगे बढ़ता रहे और जो एनिमल्स की जो हेल्थ की इश्यूज हैं उसको आप डील करने में सफल हों, ये बराबर हमारे तरफ से भी इस तरह की प्रेरणा आपको रहेगी कि जहाँ भी उपयोगिता विश्वविद्यालय की है वो आप उसको लेकर के आगे बढ़ें और दोनों मिलकर के बड़े पैमाने पर इस कार्यक्रम को चला सकते हैं। NDDB के चेयरमैन साहब हमारे बीच में आए हैं। NDDB अपने आप में एक बहुत बड़ा उदाहरण है और जो अमूल का मॉडल है वो शायद वर्ल्ड में इतना सक्सेसफुल कोऑपरेटिव का मॉडल है नहीं। अपने देश में भी जो कोऑपरेटिव्स हैं उसमें भी जो मिल्क का कोऑपरेटिव है उसकी तुलना और किसी कोऑपरेटिव से नहीं। और इसके बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, अभी मैं चर्चा भी कर रहा था आपसे आने के पहले। और इसमें केवल एनिमल्स का ही इंश्योरेंस नहीं है बल्कि जो एनिमल ग्रोवर्स हैं उनके लिए भी इंश्योरेंस और तमाम तरह की फैसिलिटी है। इसीलिए NDDB अपने में यूनिक है और इतनी सफलता दिन पर दिन देखने को मिलती है। बलिनी ने शुरुआत की झांसी जैसे जगह पर और सिंह साहब उसके CEO हमारे बीच में हैं और एक बड़े उदाहरण के रूप में बलिनी का नाम हमेशा लिया जाता है झांसी और बुंदेलखंड की परिस्थितियों में। तो ये जो दूध क्षेत्र में जो सफलता मिली है NDDB के माध्यम से वो दूसरे क्षेत्र में भी कैसे ले जा सकते हैं, एग्रीकल्चर के सेक्टर में या दूसरे और जो हॉर्टिकल्चर का सेक्टर है या फॉरेस्ट्री का सेक्टर है
तो ये बड़ी विषय है, सीट की बात है, और कोऑपरेटिव सीट में भी आ गए हैं बड़े पैमाने पर, और मुझे उम्मीद है कि चेयरमैन साहब के आने से इसमें भी बहुत सारा आप बदलाव देखेंगे, और देश को जो एक तरह से इंटीग्रेटेड जो सफलता मिलने की बात है वो हमें जरूर मिले। पाउडर की अवेलेबिलिटी एक इशू हमेशा रहता है, ड्राई पाउडर हो चाहे ग्रीन पाउडर हो, और इसके लिए तमाम मॉडल्स, मैं भी जब भी यहाँ पर आता हूँ तो रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे कि जो पाउडर की उपलब्धता है जमीन की उपलब्धता के ऊपर निर्भर है। तो जमीन की उपलब्धता निरंतर कम हो रही है, किसानों के पास जमीन कम हो रही है, तो ऐसे मॉडल्स हों जो कि छोटे किसान के लिए भी प्रोडक्टिव मॉडल्स हों, मल्टी टायर के भी मॉडल्स हों, या जो दूसरे आजकल जो तमाम इंस्ट्रूमेंट बन गए हैं उसके आधार पर भी हम मशीन के माध्यम से भी कैसे पाउडर को और उगा सकते हैं। शहर का कोई यदि एनिमल ग्रोवर है, वो यदि करना चाहता है, जमीन नहीं है, तो पाउडर प्रोडक्शन कैसे कर सकता है। अभी बहुत सारा विषय है जिसके ऊपर लगातार IGFRI काम कर रहा है, और आने वाले दिनों में और मजबूती से काम करेगा। मुझे इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये संस्थान और इसके निदेशक और सभी लोग यहाँ पर हैं, मिल करके इस नई टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाएंगे। विश्वविद्यालय ने भी एक वेटनरी कॉलेज दतिया में खोला है, और उसमें IGFRI की बड़ी भूमिका होगी। मुझे इसकी उम्मीद है कि IGFRI के डायरेक्टर साहब और सभी यहाँ के वैज्ञानिक मिल करके, क्योंकि वहाँ वेटनरी के ऊपर ज़्यादा चर्चा होगी, लेकिन पाउडर का विषय यहीं से मुझे लगता है कि पूरी तरह से एक उस संस्थान के हिस्से के रूप में IGFRI की उपयोगिता होगी। और मैं इस अवसर पर निवेदन भी करूँगा डायरेक्टर साहब से कि उस संस्थान को भी देखते हुए, और जो यहाँ की बुंदेलखंड परिस्थितियों की जो रिक्वायरमेंट्स है, इन दोनों को देखते हुए, और काफरी भी तमाम पशुओं के लिए चारा हेल्दी उगा रहे हैं, तो ये तीनों संस्थान मिलकर के एक साथ काम कर सकते हैं। और IGFRI जैसे कहा गया कि मूल है दो और संस्थानों के यहाँ विकसित होने में, चाहे RIU झांसी है या काफरी है, आपसे निकल करके बने हैं, आपकी जमीन है, तो उसमें कोई दो राय नहीं है। और आपके सहयोग से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये भी दोनों संस्थान और आगे बढ़ेंगे। मैं इस अवसर पर पुनः आप सबको विशेष बधाई देता हूँ। आप पूरी तन्मयता से, और खास करके जो यंग साइंटिस्ट इस बार बहुत सारे आए हैं, उनसे कि ये बड़ा स्पेशल क्रॉप है, और स्पेशल क्रॉप में जब तक बड़ा स्पेशल कार्य नहीं करेंगे तो आपकी पहचान नहीं बनेगी। इसलिए मेरा उन सबसे निवेदन है जो यंग साइंटिस्ट यहाँ पर आए हैं बहुत सारे, कि अपने पूरे तन्मयता से अपना तन मन धन जो भी समर्पित कर सकते हैं संस्थान के लिए और ICR के लिए, उसको समर्पित करके इस संस्थान को सुदृढ़ बनाए, क्योंकि ये संस्थान केवल स्थानीय स्तर पर नहीं बल्कि पूरे देश के लिए कार्य करता है। तो आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। सर, माननीय कुलपति महोदय, we are highly thankful for your word of appreciation for our achievement of the institute. We are also thankful to for giving you ideas and the views about future research programs and challenges for further production and achieving the further plus India mission. We are also thankful to you, sir, for all the collaborative program we are running with you at RNBCU and IGFRI as a partner. And we are sure that this institute will be always available and join hands in all your efforts, which is directed toward the livestock development and the security in the country. Now, moving ahead, this is the time for our Foundation Day lecture. फाउंडेशन डे लेक्चर के लिए मैं अपने मुख्य अतिथि महोदय को अनुरोध करूं, उसके पहले मैं कुछ बताना चाहूंगा। इस इंस्टीट्यूट के लिए, IGFRI के लिए, हमारा सबसे बड़ा और सबसे विश्वसनीय पार्टनर NDDB है। सिंस इंसेप्शन, चाहे वो टेक्नोलॉजी एक्सपेंशन की बात हो, टेक्नोलॉजी जनरेशन की बात हो, पॉलिसी लेवल पे हो, सर आपका सहयोग और आशीर्वाद NDDB का हमें हमेशा मिला है, और हम आपसे आभारी हैं। ये विभिन्न मुद्दों पे जब भी कोई चर्चा होती है, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पर कोई विषय आए,
एनडीडीबी ने हमेशा एक राष्ट्रीय संस्थान के रूप में इस संस्थान को हमेशा अपना सहयोग दिया है और हम लोगों ने हमेशा एनडीडीबी के साथ कोलैबोरेटिव प्रोग्राम हमारे चलते रहे। अभी भी अगर आप देखें तो चाहे वो सीड प्रोडक्शन में हमारे सहयोग की बात हो, सबसे बड़े पार्टनर के तौर पे एनडीडीबी है। जो ब्रीडर सीड हम पैदा करते हैं, फाउंडेशन सीड और सर्टिफाइड सीड को सबसे ज्यादा इस देश में पैदा करने वाली एजेंसी एनडीडीबी। हमारे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात हो, टेक्नोलॉजी को एक्सलेटेड वे में लोगों तक, क्लाइंट तक पहुंचाने की बात हो, तो निश्चित रूप से एनडीडीबी हमारा नेचुरल सहयोगी है एंड वी हैव बीन highly benefited by your partnership. Thank you, sir, for being with us and being your valuable partner in all our efforts in the past and coming time. Before I request your honorable chief guest to come and present the Foundation Day lecture, in brief, just like to introduce our Dr. Minesh Asab, presently Chairman and Managing Director of National Daily Development Board. He is an illustrious and multifaceted career of 39 years in the dairy sector. So you can see that about 39 years he has been here in the dairy sector of the country. He is the chairman and of the mother dairy also. He is chairman for the Indian Immunologicals, IDMC, NDDB Dairy Services, NDDB Mrida, NDDB Ka, Institute of Rural Management Anand, IRMA, National Cooperative Dairy Federation of India, NCDF, National Cooperative Organics Limited, Christine Biologicals. He is also on the General Council of the NCDC and governing body of many premier institutions of the country like Vidya Dairy, Foundation for Ecological Security, Northeast Dairy and Foods, and most important, Bharatiya Beej Sahakari Samiti Limited, which is a new creation in the cooperative, the Ministry of Cooperation. Dr. Shah is a wide internationally exposed, has the wide international exposure, and is the member of the board of the International Dairy Federation, IDF, and is also on the governing body of Dairy Sustainability Framework. Dr. Shah is also bestowed with the IDF Prize of Excellence Award 2023 in Chicago in October 2023. This award acknowledges his exceptional contribution to the work program of the International Dairy Federation, his contribution to the Association of the Dairy of the World. Dr. Shah is widely acclaimed for successful organization of the World Dairy Summit 2022 of the International Dairy Federation in India. He also ensured successful implementation of the World Bank funded Central Sector Scheme, that is National Dairy Plan Phase First, with the highest outcome rating of the highly satisfactory by the World Bank. Dr. Shah has been bestowed with the prestigious many awards, but one of the Dr. Kurian Award for the significantly contributing in the development and growth of the dairy sector in India. He has also been conferred with the Honorary Doctor of Science degree by the Kamdenu University. Dr. Minesh Shah has been a great proponent of the innovations and has been instrumental in the conceptualizing, planning, and implementation of several interventions in the dairy and allied sector in bringing about the efficiency, effectiveness, sustainability, and more importantly, enhancing the income of the small and marginal dairy farmer of the country. Dr. Shah is basically a postgraduate in the dairy technology. He is also the alumni of the IRMA Anand. So this is a great time to hear Dr. Shah as a first Foundation Day lecture on the towards Further Plus India. May I request to Dr. Minesh Shah for his word of wisdom. Dr. Minesh Shah.
डॉक्टर यादव। नमस्कार सबको। और सबसे पहले आप सभी को IGFRI के फाउंडेशन डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। डॉक्टर AC सिंह जी, ऑनरेबल वाइस चांसलर ऑफ RLBCAU, डॉक्टर पंकज कौशल जी, डायरेक्टर IGFRI, डॉक्टर अरुणाचलन जी, डायरेक्टर छात्री, डॉक्टर पुरुषोत्तम शर्मा जी, डॉक्टर यादव जी, all the invited guests, all the principal scientists and faculty members of IGFRI, CAFRI, and also RLB CAU, my colleagues from NDDB, all the policy makers, academicians, farmers, invited guests, ladies and gentlemen. I think it's actually my honor to be present on the Foundation Week, so to say, of IGFRI. जैसा मेरे से पहले स्पीकर्स ने बताया, NDDB और IGFRI एक्चुअली एक साथ संस्थाएं चालू हुई, मोर और लेस। डॉक्टर सिंह ने बताया कि 1962 में IGFRI हुआ, उनका भी बर्थ 1962 में, मेरा भी शायद ऐसा ही कोइंसिडेंस है। 1964 में NDDB का सील बोया गया, जब हमारे उस टाइम के तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी आनंद आए थे अमूल के पहले कैटल प्लान। मतलब आप इम्पोर्टेंस पाउडर का देख सकते हैं, तब तक हमारे देश में एक भी कैटल प्लान नहीं होता। न्यूट्रिशन वाज ऑलवेज निग्लेक्टेड फॉर द एनिमल्स, एंड व्हेन ही विजिटेड अमूल 1964 में आए, उन्होंने एक रात पूरी किसानों के साथ गुजारी, गांव में रहते। किसी को पता नहीं था, डॉक्टर कुरियन एंड CM गुजरात के, उन दोनों को पता था कि प्राइम मिनिस्टर गांव में रहने वाले हैं। एंड उस गांव में उनको लगा कि जो सोशल और इकोनॉमिक एम्पावरमेंट जो उस जगह का हुआ है, एक आनंद डिस्ट्रिक्ट, उस टाइम में केरा डिस्ट्रिक्ट होता था, अनडिवाइडेड केरा एंड आनंद डिस्ट्रिक्ट, ना हो, दे आर डिवाइडेड। बट seeing the progress of socio-economic development, he thought that it is important to replicate Anand model. I think आपने भी बात की है सिंह साहब की, आनंद मॉडल या अमूल को कैसे देश भर में रेप्लिकेट किया जाए। और उसी में 1964 में उसका विजिट हुआ, उसी में NDDB का जन्म हुआ, और मेरा भी जन्म 1964 का। तो इट इज ए कोइंसिडेंस। बट आज के दिन में, मतलब हमने 7 साल की जर्नी दोनों इंस्टीट्यूट कर चुके हैं। देश के लिए बहुत गर्व की बात है कि दोनों ही आज इतने इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस बन चुके हैं। IGFRI के बारे में तो डायरेक्टर साहब ने बताया, मैं NDDB के बारे में थोड़ा बताऊं तो जब हमने काम चालू किया 1970 में, जब चालू हुआ था, हमारा देश में मिल्क प्रोडक्शन करीब 20 मिलियन मैट्रिक टन होता है। हमारी आबादी बढ़ रही थी। आजादी के बाद अगर आप देखेंगे, आबादी का ग्रोथ बहुत ज्यादा था और मिल्क प्रोडक्शन का ग्रोथ कम था। तो पर कैपिटा अवेलेबिलिटी आप जो देखते हैं दूध की, वो करीब करीब 112-115 ग्राम के आसपास आ गई थी, कम होके। प्रोडक्शन बढ़ रहा था लेकिन पॉपुलेशन उससे भी ज्यादा बढ़ रहा था। आप सब जानते हैं, our country is a lacto-vegetarian population, mostly majority of our lacto-vegetarian, different from vegan. When you say vegetarian, means people believe outside that they are vegan, we don't take milk and milk products also. But then ours is a different society. We take vegetarian source and also milk-based milk and milk-based products to meet the protein requirement. Perhaps I think for the lacto-vegetarian people, the best source of protein is milk and milk product. And under those circumstances, you can understand how our milk availability was going down in the, and nutrition of the people was very, very important. हम देख रहे हैं आज भी malnutrition का प्रॉब्लम कितना गहरा जगह हर एक स्टेट में। मतलब आप डेवलप स्टेट गुजरात, अगर आप डेवलप स्टेट की बात करते हैं, वहां पे भी वी आर फेसिंग ए सीवियर चैलेंज ऑफ द malnutrition। तो इस हमारे देश के लिए बहुत जरूरी था कि हम दूध के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने।
and there was a model. Amul had shown the model, and Prime Minister who visited the Amul and Anand decided that we want to replicate Amul or Anand model throughout the country. एनडीडीबी ने 1970 से ऑपरेशन फ्लड का प्रोग्राम चलाया। बहुत ही यूनिक वे में उसका फंडिंग का अरेंजमेंट हुआ। मतलब क्योंकि हमारा देश मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स में आत्मनिर्भर नहीं था, बहुत सारी कमोडिटीज यूरोपियन यूनियन से डोनेशन में आती थी हमारे पास, चाहे वो मिल्क पाउडर हो, बटर हो, जिसको यहाँ पे रिकम्बाइन करके दूध बना के हम हमारी जरूरियात पूरी करते थे। तो एनडीडीबी ने सोचा कि ये टाइम है जब हम ये जो कमोडिटीज आती हैं डोनेशन, उसको फ्री नहीं देंगे कस्टमर, उसका हम मोनेटाइजेशन करें और उससे जो पैसा आया उसको हम यूज करेंगे, उसको हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने में। तो चाहे वो प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हो, आपको चाहिए विलेज लेवल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, कॉपरेटिव्स बनाने पड़ेंगे। तो ऑल दीज फंड्स व्हिच वर मोनेटाइज्ड from the commodities which were coming as a aid actually to our country were used for creating this infrastructure. So actually the first phase of Operation Flood was funded through this monetized commodities जो हमारे साथ आए। हमने कुछ कोऑपरेटिव यूनियन बनाए, स्पीयरहेड टीम से हमारे उस डिस्ट्रिक्ट में जाते थे, यूनियन बनाते थे, किसानों से मिलते थे, बात करते थे कि कोऑपरेटिव क्यों आपके लिए अच्छा है, आपके लिए अच्छा सॉल्यूशन क्यों है। There was a lot of exploitation going on। मतलब आज आप हम बलिनी की यहाँ पे बात करते हैं इस एरिया में, आप लोग जो इस एरिया में है कुछ सालों से आपको पता है बालिनी जब नहीं था इधर, किसानों को दूध बेचने के लिए कोई आउटलेट नहीं था, कोई मार्केट एक्सेस नहीं था। वो उसको या तो कोई नियरेस्ट सिटी में जाके खोवा बना के या छेना बना के या दूध जाके कोई दूधिया को देना पड़ेगा या मिठाई मेट वाले को देना पड़ेगा। उसके अलावा उसके पास कोई ऐसा ऑप्शन नहीं था कि कोई उसके डोर स्टेप में आके डेली दूध खरीदे और एक अच्छा रेम्यूनरेटिव प्राइस उसको प्रोवाइड करें। तो ये ऑपरेशन फ्लड से शुरू हुआ जब हमने ज्यादा से ज्यादा किसानों को संगठित किया थ्रू एक कोऑपरेटिव मॉडल, एक ऐसा मॉडल जिसमें प्रोड्यूसर ही उसके ओनर है। तो व्हेन वी से कोऑपरेटिव एक्चुअली इट इज द मॉडल वेयर द ओनर्स आर आल्सो द प्रोड्यूसर। तो आप जो रॉ मटेरियल लेते हैं, आप जो प्रोसेस करते हैं, बेचते हैं, सबका मालिक जो है वही है जो रॉ मटेरियल आपको सप्लाई करते हैं। तो ऐसी इंडस्ट्री, ऐसा एक मॉडल जो डेवलप हो चुका था उसको हमने पूरा रेप्लिकेट किया। फर्स्ट फेज में बहुत हमने सक्सेस मिला। वी कंटिन्यूड विद द अदर 2 phases with the support from World Bank, but then funded those next 2 phases. And at the end of the third phase, जब 1970 से हमने चालू किया था, 1996 में we ended with the Operation Flood program। हमने देश में करीब 180 डिस्ट्रिक्ट लेवल मिल्क कोऑपरेटिव बनाए। 1 करोड़ से ज्यादा किसानों को हमने शामिल किया कोऑपरेटिव्स में। काफी सारे गांव, 1 लाख से ज्यादा गांव हमने कवर किए कोऑपरेटिव में। और ये सबका रिजल्ट ये आया कि 1998 में इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश बन गया। मैं जो बात कर रहा हूँ कहाँ पे 20 मिलियन मैट्रिक टन था और हमारा प्रोडक्शन 100 मिलियन मैट्रिक टन से ज्यादा बढ़ गया और हम दुनिया में नंबर 1 देश बन गए। तब से लेके आज तक we continue to hold that position। We are the largest milk producer। Now the production is about 232 million metric tons, 22-23 published figure। The next best is US। US is producing about 105 million metric tons। मतलब आप समझ सकते हैं गैप कितना है। हमारे से आधे से भी कम आज हमारा नेक्स्ट जो कंट्री है वो प्रोड्यूस करता है, विच मीन्स दैट अगले 50 साल में वी हैव नो चैलेंज, हमारे को कोई बीट नहीं कर सकता है। और उसका रीजन है, सो अपार्ट फ्रॉम द न्यूट्रिशन एंगल विच आई टोल्ड, द अदर एंगल इज द लाइवलीहुड। हमारे लिए, इंडिया के लिए ये बहुत जरूरी है बिकॉज इवन टुडे दो वी आर द लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर, the producer who are supplying milk, they are all small and marginal। 80-85% of our producer member farmer members are small and marginal, means
they either have less than 1 hectare land or they have less than 3 animals with them. And for them, this is the livelihood. So every day, morning, evening, उनको दूध से पैसा जो मिलता है, many of the I think areas where now actually the animal husbandry has become the primary source of income, although it started as a secondary income source after agriculture. Many areas now animal husbandry has taken over. Today, dairying alone contributes about 5% to the national GDP. अब एग्रीकल्चर जीडीपी में देखेंगे लाइवस्टॉक का हिस्सा, अब if you see from the independence and now consistently livestock proportion or stake in the total agricultural economy is growing, and almost 30% is the present share agriculture economy में livestock है, और livestock का जो share है उसमें फिर से almost 70% comes from dairy. तो ये जो सेक्टर है, मतलब कोऑपरेटिव की अलोन अगर मैं कुछ फिगर में बात करूं, लास्ट ईयर दी कोऑपरेटिव्स अलोन पेड ऑलमोस्ट 12 lakh crore sorry, I think I give you right figure, 95,000 crore rupees to the member. So 95 crore rupees going to almost about 2 crore families, 2 crore members in the cooperatives. Every day 260 crore, if you divide, you will get, which is going to the rural sector, and only from the animal husbandry and the I don't think there is any other industry which gives so much money back to the rural milk producer. So success which was achieved is because our sector is different, our model is different. It is entirely small dairy scale or small holder system model, and the credit to all this is not, it's not the NDDB alone in this journey. I think we have to appreciate and acknowledge the role which is played by IDFI, for example. For NDDB alone or for the milk producer alone, it is not possible to grow the way we have grown over last 6 decades. You need the efforts of all the agencies, all the stakeholders together. Then only you can achieve this kind of success. So thank you, IDFI. I think we have our fiscal partner, Dr. Yadav, ने पहले ही बोल चुके हैं that we have been working together. We have been partner for many years now. And I continue to believe that going forward we will have more and more association. I was very amazed by the speech we have in the morning. There are many things which I was aware about the activities, but then very new things I have done, including the efforts on the grassroots physically, because I was not aware that the area under grassland is more than the area under border. So it's learning for me. And I think we will continue to work together and see that how we can fulfill, support to achieve your vision of making the country, Atmanirbhar in the forest. So thank you. Thank you again for inviting me and, speaking to you. Let us go back and now see what are the challenges, in terms of the fodder availability we have today. We have been growing, the sector is growing, or milk production is growing almost 6% per annum. If you see the last year, the world growth rate is only 2%. We have taken various scientific measures in recent past. So whether it is the major challenge what we have as a country is when we say to the world that we are the largest milk producer, the counter argument is always that so what? You also have the largest number of animals. So when we say that we have 230 million metric tons of milk production, we immediately say that you have 300 million cattle and buffaloes. So our first and foremost challenge, or as the scientists, which we have to do is how can we continue to get this growth rate 6%, 7% per annum with the less number of animals. And
that is only possible by improving the productivity of animals, which is known. I think everybody is working on it. In fact, although our productivity in terms of absolute numbers, if you see, we are very low, in terms of if you compare it with the developed countries. But if you see the growth rate which we have achieved over a period of last 10 years, I think we are the highest growing country in terms of improvement in the productivity. In terms of percentage improve the productivity, India today has the highest growth rate. Although in absolute terms, there is a long way or long journey we have to pass. But to achieve that productivity levels which we want, three important things I think we all know: the breeding, nutrition, and health. There is no other way than dealing with all these three areas. So we have started various scientific programs on breeding. Any artificial insemination still remains the best tool today for the genetic improvement of the animal. We have been working from last more than 3 years. But recently we have also started the progeny testing programs, conserving our own indigenous breeds. And through the progeny testing programs, we have started the milk recording program so that we can shift from the pencil. Generally, when you select the animal, generally they ask, what is the उनकी माँ का कितना दूध था, बहन का कितना दूध था, उसके बेसिस में we just take the call. Now we are moving to the genomic selection of the animal. NDDB has developed the genomic chips for cows, almost all the breeds, including our indigenous breeds like Gira and Saiwa. We have also developed chips for the buffaloes. And through these genomic chips, just by testing the DNA or blood sample, we can predict that when the animal becomes pregnant and starts giving milk, what will be the yield. You can see the percentage purity of the breed. So there are a lot of scientific innovations are happening in the breeding area. And DDB has in fact now developed its own sex-sorted technology. So there were two technologies world over, SC and ABS, both are US-based companies. Now we have the third technology, which is developed by NDDB. Last month on 5th October, our Prime Minister has formally launched the sex-sorted semen, our own indigenous technology. इससे जो अभी 800 रुपया 700 रुपया में जो किसान को एक sex-sorted semen का AI के लिए डोज मिलता है प्रोजेन सेमेन का, now we are bringing it to about 250 to 300. बेसिक एडवांटेज इसका ये रहेगा कि आपका जो 90% फीमेल पैदा होंगे, तो आज हमारा एक जो चैलेंज फॉर्डर के लिए भी है कि the nutrition or the fodder availability which we have is also going for the male counterparts. I think we will be able to reduce the number of male calves which are born, and that way we will improve the availability of fodder to the good quality. Breeding में हम इतना काम करते हैं. There are many other scientific measures which have started, but even if we go for the best quality genetic materials, we achieve the genetics which we want, we improve the genetic level of the cows and buffaloes. If they are not supported by the proper nutrition, I think we will still have the same problem. We will not be able to improve the productivity of animals. I think there the role of IGFRI is very, very important. We are generally, so far we have seen cattle feed or the compounded cattle feed as the nutritional source for the animals. And somehow, maybe because the availability of this, or we have completely ignored the green fodder and dry fodder for the animals. And I am happy that with the efforts of IGFRI and several other institutes, and taking those research and efforts to the ground level by institutes like NDDB and the dairy cooperatives in the country, I think today we are improving the availability of green fodder. There is a lot of awareness. When we started National Dairy Plan and when we talked about silage, I think except for 1 or 2 states, farmers were not aware that what is silage. So it's important that I think we'll have to promote the use of green fodder, including the conserved green fodder in the form of silage or other things. And availability of green fodder becomes very, very important.
And we will be, I think, working together to fulfill your vision mission and also see that the availability of green fodder continue to remain adequate in our country. The other area which is important is also dry fodder, because although in terms of the nutrition it may have the less value, but then for the animal the dry fodder importance also cannot be ruled out. And with the technology now we have a lot of options. We have seen areas like Punjab and Haryana, generally the crop residues are burned. It also poses the environmental challenge. हम अभी ये जो टाइम है दिल्ली में, nobody wants to stay in Delhi क्योंकि वो AQI इतना बढ़ जाता है, and normally the blame comes on the farmer, वो जला देते हैं पराली, इसीलिए ये प्रॉब्लम है. गाड़ी से जो एनवायरमेंट प्रदूषित होता है कोई नहीं बोलता, बिकॉज इट इज कन्वीनियंस फॉर अस. बट एक किसान अगर थोड़ा बहुत प्रदूषित कर लेता है तुरंत दी ब्लेम गेम स्टार्ट. तो एनडीडीबी ने बहुत सारा काम किया है इसमें. वी हैव डेवलप्ड ड्राई पाउडर पैलेट्स. उसको हम नाउ वी हैव द इक्विपमेंट अवेलेबल, मूवर्स आर अवेलेबल, बेलर्स आर अवेलेबल. You can cut it fine, conserve the crop residues, make it into the bales or the blocks, maybe with the urea molasses, and use it for, in terms of dry PMR. Actually, we have set up 2 plants, one in PMR for the animals, and results are very good. So I think that is one area. I don't know whether it falls into your purview or not, but that is one area that how do we conserve the crop residues, which are as of now hardly maybe 20% or 30% of the residues are used for the feeding and remaining are wasted. Can we make use of more and more such crop residues so that we benefit of the animal and meeting some of the nutritional requirements of the animal? That is the other area I think which NDDB is working, and we will definitely seek support of AEFI. Like the dry TMR, the third area which we are working is the total TMR concept. We have seen world over compound cattle feed is used along with the dry fodder, green fodder, and a total mixed ration is fed to the animals. So generally the farmer is able to get the ready PMR option, unlike here where farmer has to bring the compound cattle feed, then he will have to get the green fodder also and dry fodder also. So we are working on our first pilot with Amul Dairy in Anand. In fact, we have already got the machines and the installation is in progress. And just few days back, I only inaugurated, on the 29th October, I only inaugurated the first TMR plant of the Amul, first of its kind so far in the country. And NDDB is going to replicate this plant all over the country to see that the mix of ration, basically including compound cattle feed, dry feed, and green fodder, is being provided to the farmers, maybe in a bag of 50 kg or 100 kg. So this is another area where we have been working, and we will surely seek your support wherever possible to take this initiative forward. Some of the other areas, I think, which we are working, Dr. Yadav has already told about the fodder seeds. In fact, in our country, if you see, the major reason for the low yield of crops, not only for fodder but also all the agriculture crops, is the availability of certified seeds or availability of good quality seeds. And that is the reason we have been working with IGFRI for a long time to get the breeder seed, foundation seeds, and the certify and give it to farmers. We have both the sets of farmers where we have the farmers who have large land available, so they grow the seeds. We then process, certify, and give it to the farmers who don't have land or who can't grow their own seeds, and we supply the certified seeds to the farmer. And slowly,
the quantity of these seeds is increasing. And with the support of NLM also, we have been consistently increasing the availability of seeds and quantity of seeds which are being supplied. In 2023, for example, we made available about 80,000 quintals of seeds to the farmers, and this year our target is 1 lakh quintals of. So I think again, thank you, IGFRI. We have been able to work together and facilitate farmers in getting the good quality seeds wherever they are in need of, and this is also helping both NDDB and the IGFRI to meet the goal of making our country, for in terms of self-sufficiency in the fodder. The another area associated with the seed, I think, which was briefly touched upon, is the formation of the new multi-state cooperative society by the Ministry of Cooperatives, which is recently formed by Government of India. And the Bharatiya Bij Sahkari Samiti Limited, NDDB, is a promoter of BBSHL. We have the 5 promoters, including DIPCO, IFCO, NAFED, NCDC, and NDDB. So, best 5 institutes under the cooperative umbrella are the promoter. We are trying to get more and more cooperatives as a member. We have already crossed, I think, member base of more than 10,000 for the BBSHL. And idea is to provide good quality certified seeds, grow more and more foundation and certified seeds, and make it available to the farmers. So I think that initiative is also definitely going to help in improving the fodder seed availability and thereby the fodder availability in our country. Some of the I think areas which I would like to focus, which we have discussed briefly in the morning also, which we would like to work together going forward after seeing the visit and the work which is being done by IGFRI. One thing is, I think, which is very important, like we discussed, is mapping of agroclimatic zones, because as it is discussed, they have the very good research and the technical arms with the IGFRI. We have the reach to take these technologies to the farmers, and both together can work and find out various agroclimatic zones of the country. And from the technical point of view, which are the best fodder crops or which are the best grasses to be grown on those zones. So with the help of the cooperatives working in those areas, we will then be able to have the extension activities or the awareness programs for the farmer, and then we can suggest them to go for those kind of crops in place of the traditional crops or fodder which they are growing. The other area where I see a lot of opportunity of working together is the bioenergy fodder crops. Actually, NDDB has started working on the gobar, the dung-based solutions to improve the sustainability of the sector, because the animals are always playing for the methane emission. The methane is a greenhouse gas, and the emission damage the ozone layer and all these climatic changes and whatever is happening. Animals are also blamed along with the other manufacturing sectors, and we have been now working to see that how can we make our sector net zero in terms of the carbon. And in that effort, we have started large scale initiative of the biogas and organic manure. So we have the decentralized plant where we give a small 2 to 3 meter biogas plant at the farmer's backyard. So he can put the 15, 20, 30 kg of gobar, mix it with water, and the methane which is produced, digested, is used for the cooking medium, and the slurry is then converted into the organic manures.
We have also taken this initiative on the centralized way, where almost 100 metric ton of dung or gobar is purchased at one centralized location. We have a large capacity biogas plant of about 4,000 cubic meters. Biogas produced is again digested, used for the thermal energy, so you can produce steam. You can avoid the fossil fuel and use for the thermal energy, or it can be further purified, compressed, and used for the vehicle mobility. So we have now partnered with Suzuki Motors, and they are interested in the mobility of the vehicle through the biogas or the compressed biogas which is produced from the gobar. So I was discussing that as of now we are only using dung as a source to produce the biogas. Will it be possible to mix some kind of fodder bioenergy crop also with the dung, which can further enhance the yield of the biogas, and we can definitely work together, get some pilots established, and then we can take it forward so that our yield for the biogas can further improve. I think one more initiative which we have discussed is on our collaboration with ISRO. So ISRO and NDDB has signed the memorandum of understanding only last week during the visit of Honorable Home and Cooperative Minister to NDDB during our Diamond Jubilee celebration. So we have signed an MOU to map the border area. So with the help of satellites, they will be able to give us that this is the total area which is used for the border. And then depending on the area, we can work with the cooperatives to suggest what to do. I think after my visit today, we have discussed with the directors also, and it can be further classified. So I think with the technology or the knowledge available with IGFRI, we will be further able to classify the border area into various other, other types like the grasses or the fodder or the legumes. And I think that will be one further initiative which I believe that we can work together going forward, and ISRO and DDB and IGFRI can further improve the knowledge what we have. One more initiative which we did with the Ministry of Agriculture, you may be aware 10,000 FPOs were approved by the Ministry of Agriculture, and since NDDB is always promoting the FPOs and cooperatives, we have taken 100 FPOs exclusively for the fodder, and we had also named them as fodder plus FPO. And I'm happy to state that all these 100 FPOs are now established. They are set up. Most of them, almost 70-80 of them, have started commercial activity, and the initial response which they have got is excellent. I think Balini has also promoted one such fodder FPO, and many other cooperatives in the country. So these 100 FPOs are basically aiming at improving the fodder availability. They work on fodder seed, green fodder, dry fodder, and meet the nutrition need of the animal. And I think that is one more area where we are trying to develop a good model, where the model is viable, and then we can further replicate. The scheme is over, but then we can always set up more and more such producer-owned institutions or fodder FPOs, which will also help in meeting the requirement of these fodder. I have seen various activities which are being done here. What I see that the expectation is also that we can come out with some ideas or from the customer point of view, what IGFRI can prioritize in the research going forward. So one is, I think, development of low yielding varieties of some of the perennial grasses or legumes for the arid or semi-arid regions. I think that is the requirement of our nation, and research can be prioritized. Also, some dual purpose grain fodder varieties
I think you have many such varieties in pipeline, but if they are ready, I think we'll be very happy to take it forward for the use of the farmers going forward. One more thing I think we can work together. I saw a lot of work is being done on the cactus, moringa, indula. So can we have some evaluation and production of non-conventional such fodder crops so that we can take those crops also to the farmers. And I have seen many developments on the climate resistant varieties which we have developed. So can we have such technologies or such varieties available to us which are heat resistance, which has a drought tolerance, and we will be very happy to take this kind of fodder seeds to strengthen the efforts of our seed and fodder production which is suitable and can address the climate problem what we have. I think with that I would like to end because my time is up. But then I can say that 3-4 more areas which we are working when we have the 100th year of independence. So apart from our major focus area is the productivity improvement of the animal, which takes care of the nutrition, health and breeding aspect of the animal. The other area which I referred, the vision with which we are working is net zero dairy. So how can we make our sector more sustainable? The third area, which we have recently started, I think it was referred by again Dr. Singh, is the vitalization too. So as of now, we have about 6.5 lakh villages in our country, and of those, about 3.5 lakh villages have a Gram Panchayat or they are recognized by the revenue records. And the government efforts after opening of the new Ministry of Cooperative is to see that can every such village where there is a Gram Panchayat, that means about 3.5 lakh villages, have at least one cooperative which is supporting farmers. Because it is the, I think you will also agree that India has reached to a 5th largest economy now. We have a lot of aspirations to go further, maybe 3rd largest in the next 5 years. And ultimate goal of making our country a developed nation, when we achieve the 100th year of our independence. 60-70% of our population still live in the rural areas. Their predominant occupation is agriculture. And if these goals or this vision of the government, it has to see the light, I think it is very important that we take the 60-70% people who stay in the rural area also in their journey of making our country developed nation. And that is only possible if they are involved in cooperative. Cooperative is the only solution if we have to involve them. So whether it is agriculture, whether it is dairy, whether it is fishery or any other sector, I think cooperative is the answer. Because if you see, for example, the model which is developed for dairy cooperative, today we are passing on 75 to 80% of the consumer rupee. That means when you buy milk at 50 rupees, 40 rupees from that 50 rupees is going back to farmer. आप इंडिया में कोई भी दूसरी कमोडिटी देख लीजिए, एग्रीकल्चर कमोडिटी, क्या इतना हायर शेयर कंज्यूमर का क्या प्रोड्यूसर के पास जा रहा है, या वर्ल्ड में डेयरी का आप देख लीजिए या एनी अदर कमोडिटी देख लीजिए, वर्ल्ड में इनफैक्ट डेयरी इफ यू सी 1/3 goes back to producer, 1/3 remains with the processor, and 1/3 is taken by the modern trade chain, जो आपका modern marketing जो है, so the Amazons and others they take 1/3. So ultimately the producer gets only 1/3 from the money which we spend. Whereas in India we are able to pass on almost 75-80% of the consumer rupee back to producer. Can we replicate जो आज डेयरी में हो रहा है, जो इतना हायर शेयर हम प्रोड्यूसर को दे रहे हैं? Because solution ये इसलिए दे पा रहे हैं because the producer are the owners. Cooperatives में owners are the members themselves. तो प्रोडक्शन भी वही करते हैं, प्रोसेसिंग भी वही करते हैं, मार्केटिंग भी वही करते हैं. पूरा जो वैल्यू सिस्टम है उनके ओनर फार्मर है या मेंबर हैं.
So if we are able to replicate this model into other agriculture community, I think वहाँ पे भी काफी स्कोप है कि हम इसको शेयर बढ़ा पाए इवन इन द एग्रीकल्चर। तो आज हम देखते हैं हम साल में एक बार 10 रुपये में भी टमाटर खरीदते हैं, 100 रुपया में भी खरीदते हैं। एक नहीं सी दोनों हम खरीदते हैं। मिल्क में कभी आप ये नहीं देखोगे। We have largely stabilized the prices of the commodity, and I think that is required for the agriculture sector also, most of the agriculture commodities also, so that the farmer gets the maximum share out of the consumer which is spent. And वो achieve करने के लिए dairy sector has demonstrated successfully that it is possible through the cooperative efforts. And I think time has come that we see other sectors also, other agricultural commodities also. Can we replicate the similar model with some, changes, whatever required, and to other agriculture commodities? So ये भी एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। अपार्ट फ्रॉम 3.5 लाख विलेजेस में, जहाँ पे कुछ 1 लाख विलेजेस में ऑलरेडी कोऑपरेटिव्स हैं, बाकी के 2 लाख विलेजेस में हमें नए कोऑपरेटिव्स बनाने हैं। उसमें से आधे हम ये उम्मीद करते हैं कि डेयरी के लिए वायबल होंगे। तो एनडीडीबी को ये मैंडेट दिया गया है कि वो 1 लाख विलेजेस हम कवर करें डेयरी कोऑपरेटिव्स के लिए। कोऑपरेटिव्स को मल्टीपर्पज भी बनाए, तो डेयरी कोऑपरेटिव होगा वो एग्रीकल्चर का भी काम करेगा, फिशरीज का भी काम करेगा, एंड वाइस वर्सा। So in this way, I think NABARD for agriculture and NDDB for dairy and NFDB for fisheries, 3 institutes are identified. We are going to cover all the villages, Gram Panchayat villages through these cooperatives, and 1 lakh such villages, as I told, will be dairy, which is the bioevaluation 2 actually. And through the efforts of Ministry of Cooperatives and NDDB and Ministry of Animal Husbandry and Dairy, we are coming out with various schemes which will make replicated in other countries where in the other state of the countries where dairying is still not developed. So NDDB is going in a big way. We are talking to the state governments wherever they are unable to take up or implement the projects on their own. NDDB is helping them. In fact, we have taken over some of the dairy activities of the state. So we are exclusively working in states like Assam, Jharkhand. We are talking to Chhattisgarh and MP also. So in those states, this work of forming new cooperatives, providing market access to the farmer will be undertaken by NDDB in a big way. The other area is, I think, improving the share of value addition and also increasing the share in the export. तो अगर मैं डेयरी की बात करूं, आज के दिन में हमारा प्रोडक्शन सबसे ज्यादा है, लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर है, लेकिन कंजम्पशन भी इतना ज्यादा है। वी हैव अ लार्ज बेस, लार्ज पॉपुलेशन टू फीड। तो आज के दिन में डिमांड रेट, प्रोडक्शन रेट दोनों मोर और लेस एक साथ ग्रो कर रहे हैं, लेकिन विद द साइंटिफिक मेजर्स व्हिच वी आर टेकिंग both in breeding, nutrition and other aspects, I think our production growth rate will surpass demand growth rate at some point of time. And अगर हमें फार्मर्स को एक अच्छा प्राइस कंटिन्यू देना है, क्योंकि अगर आपका प्रोडक्शन ज्यादा है, डिमांड कम होगा, तो नेचुरली प्राइस जो हम फार्मर को दे पा रहे हैं वो कम हो जाएगा, और उसमें फिर से फार्मर्स दूसरे स्विच हो सकते हैं डेयरी से कोई दूसरे सेक्टर में। So to avoid that, I think we'll also have to see, can we go beyond India? So can we start exporting some of our product? The government of India and NDDB together, we are actually working together. There are some challenges, some problems in exporting our products, but one by one, we are addressing those challenges, making our country capable and, to see that in most of the countries, we are able to export our milk and milk products. Our products in terms of quality are as good as any product in the world. And this will allow us to pass on maximum share again or better value for their produce to the farmer. And I think this is the reason we have the actually workshop to see how we see Vision 2047 in terms of the dairy industry.
And I'm happy that even he was part of our deliberation. He came there, and we are addressing the challenges in entire value chain, as being told that we work in the entire value chain from cow to consumer, and we are going to address challenges one by one to see that we achieve the ultimate vision of our making our country developed nation. We are doing a small part through dairying, but I think there are many such institutes in country which will also, work in tandem to see that we become a developed nation by 2047. So at the end, I think, thank you very much for giving this opportunity. I'm very happy and delighted to be with all of you. And I expect that our collaboration, which is a great collaboration now, then it will further, improve. We'll be able to serve the small and marginal farmers of our country and help them to improve their income. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you, Honorable Chief Guest, Dr. Linesh Sir, for giving a very holistic and visionary lecture. And this is a fantastic beginning of our lecture series. So thank you, sir. And you have narrated the inspiring story of NBDV, how NBDV started with the Operation Plus Plus, and how it is changing the life of millions of the farmers. And you have rightly pointed out that the about 260 crore directly going to the farmers' account per day. That is great one and great national service. And the NDTV is basically changing the life of the and giving a purpose of the life of the millions of the farmers, especially to the women. That is remarkable and really that is a life nation building work you are doing, sir. And you have given many tasks to us also, and where we can have joint hands and like the mapping of the agroclimatic zones, the bioenergy plantations of the crops, GIS based technology for the border areas assessment, many things, FPO, low living variety, dual purpose varieties, and many things which have non-conventional crops. All those things definitely we are going to take in the future in our program, and we will be going to have the NDDB as one of the valued partner. And definitely, sir, you have given the one more idea that how the cooperative can be a force which can be used for the as a changing the life of the farmers and the poor people. And you have already told that the about more than 80% of the consumer price is going to the farmers share. So that is a great one, and that is a very inspiring one for all, and how we can make the things more better where we are facing the problem of the prices in many crops. So thank you, sir, for being with us and giving your valued ideas and sharing your thoughts on that, how we can move further and how we can go beyond that, we making this country a large order plus nation. Thank you, sir. May I request you, Dr. Purushottam Sharma now, our head of division, we are farmer group of thank Dr. Sharma, please. Thank you, Yadav. Honorable Chairman Sir, Dr. Linesh Sir, Honorable Vice Chancellor Sir, Dr. KCB, Honorable President Dr. Arunachal Sir, Honorable Director Farai, Dr. Kaushal Sir, our honorable guest of honor, staff, of the persons present in the hall. We all know that NDDB has led the country from net deficit to net surplus. Now we are exporting milk production. So in this, all leadership come from the NDDB. And as an importer, in background, simultaneously, IGFRI has provided leadership for further development, which led to the
our success of this and other programs will be delivered. Due to which, as our director told that we have come to the deficit of around 12% green and 13-23% green. To celebrate this, we have initiated this lecture series to our moving towards Photographers India, and for this first lecture series, first start of this series, Dr. Saha actually is one of the best person to deal with this. So, sir, thank you, sir, for accepting our request, giving lot of new research areas and the areas for the collaboration. Along with the Chairman, sir, a team of senior officers of the NDDB has come with us. C.P. Devanand, Dr. Raghu, Dr. Rajesh Gupta ji, Mohammad Rashid ji. We are thankful to all the senior team. In our Bundelkhand region, due to the efforts of the NDDB, the FPO promoted by the NDDB, following job working with us, and we are closely collaborating. And CEO Dr. O.P. Singh and his team is with us. Thanks for our Vice Chancellor, sir, Dr. Singh, is the senior most among us. He is our guiding force, and he guides us in various events. We organize joint events, we conduct joint teaching. And sir, we are very thankful for your working, sir. Our next senior sister institute, CAFT, we all collaborate in our programs. Dr. Ronachal sir, with us, he has extended what we said in collaboration. Thank you, sir. On this occasion, our one of the senior, Dr. S.K. Samaji and Dr. B.P. Bhatt. So we are very thankful for your kind place on this occasion. From RNBCO, we have Dr. Anil Kumar, the Director of Education, Dr. R.K. Singh, Dean Agriculture College, Dr. Dobryal, Dr. Manish Srivastava, Dr. A.K. Rao. We are also very thankful for your kind presence on this occasion. And I'm thankful for all the staff of the IGFI, CAFT, and RLBCO who has participated with us on this auspicious occasion. I'm thankful for all the chairmen of the committees, members of the committees. Due to their efforts only, this Foundation Day week celebration is going on. I'm thankful for all the security staff, media staff for coverage of our events. I'm thankful to the trainees of the Odisha Veterinary Department who have joined us in the celebration of it. IGFI. And the last, thank you for all of you. Thanks. You are invited for some of the outside. Thank you.